Hello everyone, this is Pankaj Rana from Civil Engineering Department of Chandigarh Polytechnic College. In today's lecture, we are going to start off with the next chapter of applied mechanics, that is moment. So in this chapter, we are going to discuss about what is moment and how we can calculate the moment at any points, and what is the principle of moment, as well as we will talk about what is couple, and these all are the things which we are going to discuss. So not wasting too much time, let's start with the next chapter of applied mechanics. So if we see, then here as I have already told you about the book which you can prefer. This is the book of Applied Mechanics by Dr. M.L. Ori, and which is strictly based upon the syllabus prescribed by the Punjab State Board of Technical Educations. So those students who belongs to Punjab, and those who belongs to Punjab, I mean to say, those who used to study under this board, or जो इसके इस board के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, they can go with this book. This is quite a good book where you will find the syllabus in prescribed manners. You can prefer any book, but this is also one of the good book for applied mechanics. So let's start with movement. So if we see, what is movement is, then we must know what is movement. Here you can see the example of movement. So before talking about movements, as I already told you, we'll talk about movement and forces of movements. So in अगर हम movement की बात करते हैं तो movement है क्या? Movement क्या है? देखो यहाँ पे डायग्राम अगर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डायग्राम हमने देखिए एग्जांपल दिया है यहाँ पे एक, कि क्या दिया हुआ हमने, movement measure the turning effect of the force about a given axis. Example, a door. Very simple. मूवमेंट क्या है, किसी फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को मेजर करती है. मींस मूवमेंट मींस एक तरह की रोटेशन. रोटेशन, आप मूवमेंट को रोटेशन भी कह सकते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये डोर है एक, ठीक है. डोर में ये हैंडल लगा हुआ है, एंड दीज आर द हिंजेस विद विच अपना ये डोर फिक्स है. नाउ व्हाट्स हैपनिंग हियर, जब मैं डोर को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ, दिस एफ फोर्स, देन क्या हो रहा है, कुछ मूवमेंट जनरेट हो रही है अलोंग दिस एक्सिस, along this point. Okay, so so इस फोर्स की वजह से जो मूवमेंट जनरेट हो रही है, अब मुझे अगर इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट निकालनी है, तो हाउ वी कैन कैलकुलेट दैट. So in journal you will find in some book the definition for movement is basically a rotation, and it can be calculated as the force, applied force. This is the applied force applied force into the perpendicular distance. आप ये देखिए, इस फोर्स के परपेंडिकुलर है ये डिस्टेंस. You can see this is the perpendicular distance. The perpendicular distance. So the perpendicular distance here is D. Okay, let's take an example. This is A. Let me show you through draw something here. If we have like this is something which is fixed here, and this is a beam or rod, or you can consider anything here. The load is acting over here. Okay, now you have to calculate the moment about this axis, and this distance is let's take it as just to me draw it with different colors so that it would be easy to all of you to understand this concept. This distance, let's take it as x. Okay, it is x here, and this is our force P. Okay, let's take it as capital P, and we have to calculate the moment about this axis here at this point. Now, what I have told you, force, the applied force, this is the force into perpendicular distance. Okay, multiplied with the perpendicular distance. So M is equal to P into X. Okay, P into X means this force into the perpendicular distance. I hope clear हो गया होगा कि आपको ये कि मोमेंट क्या चीज होती है. जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है एक आपका, यहाँ पे एक हमने एग्जांपल देखा किस चीज का, यहाँ पे एक डोर का एग्जांपल हमने यहाँ पे देखा. चलिए, now moving on with the next topic, that is units of measurement. Yeah, unit of measurement for movement. So what is the unit of movement? As we all know, the unit of force is Newton, and distance can be in meter, it can be in mm. Okay, so this is the basic unit, or you can say the unit for movement. Therefore the movement may be expressed in Newton meter,
or kilonewton meter or newton mm or newton kilonewton mm. So here from this formula you can easily calculate the unit of moment. I don't think so you will find any kind of difficulty in calculating the units of moments. So this is all about the moment. Moment क्या है? Moment rotation है. Rotation about any axis. ठीक है? So moment कैसे find out होता है? The force into the perpendicular distance along with the along that particular you can say the line of action. Okay, moment force into the perpendicular distance. Now in this particular slide we will talk about the concept of couple, its properties and effects, what is Pellet forces, and Varignon's theorem also we will talk about. Uh, Okay, so now moving on with the next slide, that is Varignon theorem. अब Varignon theorem क्या है? बहुत ही सिंपल है. इसमें देखिए इन्होंने मतलब इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है अपनी ओर से. क्या दिया है? So this theorem states that the moment of a force about any point, the moment of a force. Now we must know what is this meaning of moment of force. What is the meaning of this word here? Okay, this moment of force about any point is equal to the sum of the moments of its components, and we also must know about the meaning of these components about the same point. Okay, now moment of a force. Moment of a force means like this is an object and the force acting this. So due to this force there is a moment. अब क्या है, जैसे ये एक मैंने बीम बनाया है, यहाँ पे फोर्स लग रही है तो ये बेंड होगा इस तरह से नीचे को, तो मेरा मूवमेंट इस तरह से लग रहा है. So this is the moment of force. Okay, and its components. In components means let's take an example. जैसे we have this axis like let me draw it again. Here it is. One we have this force and here we have another one, and this one is the resultant. You can draw it like this is the resultant force. This is the one force, the one component, and this is the second. You can give them name as this is P. Okay, this is Q, and this is your R, which means R is for resultant. So now these components, these two forces can be represented as the as resultant. मैं इन दोनों forces को as a resultant represent कर सकता हूँ. ठीक है, तो वही यहाँ पे components की बात कर रहा है. ठीक है, जैसे कि कोई किसी भी point पे, जैसे मान लिया if this there is a point like if we have a point here, this if this is a point, यहाँ पे कोई movement लग रहा है, हमें movement find out करना है, then how we can do that, whether it is a clockwise movement or whether it is a anti-clockwise movement, that we need to see. Okay, and there are certain we have sign convention for this also. So यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जो movement of a force है about any axis, that is algebraic sum. Algebraic sum क्या होगा? Algebraic sum of moment of forces. Okay, I can write here like this is the text here. Algebraic sum you can give notation, you can give this notation of moment of forces, okay, is equal to the component forces is equal to the sum of the components. Okay, यही इसने कहा है, the component of forces that is R. Okay, अब now अब इसमें क्या है, R प्लस इंटू जो भी आपका डिस्टेंस रहेगा वो यहाँ पे हमारा आप कैलकुलेट कर सकते हो उसको. चलिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा कि वेरिग्नन थ्योरम का यूज किस लिए होता है. With the help of Varignon theorem, you can easily find out the point for that resultant force, the point for any resultant force. Like we have an example. अगर मैं एक example के यहाँ पे देखूं, तो अगर this is an a beam, you can say, यहाँ पे अगर forces लग रही हैं मेरे पास, this one is here is the one force. Okay, ये कोई second force लग रहा है.
This is the second force. If you see, just a minute. I think there must be some error in this. We need to rectify this. Okay, here it is. This is the one, and here comes the another one. This is the another force acting there. Okay, so now we can easily find out the this must have some distance. These points, these must have some distance here. The distance from this to this point, let's take it as x, and this is y. Okay, you can take it as 1 meter, and again it is 1 meter from this very point. Okay, this is 1 meter, and this is 1 meter again. Okay, now we can easily calculate the moments. Okay, reaction, the moment at this point A, moment along A, this force, if it is P, and if this is Q, so P into this distance 1 plus, and this distance is equal to this distance Q into this particular distance, this 1 plus 1 2. Now you can take the clockwise movement as negative, and here it is clockwise, and anti-clockwise movement, as positive. Okay, you can take it as positive and negative, and vice versa as well. Okay, so you need to be very careful about while taking the sign convention, because अगर sign convention हमने कुछ गड़बड़ किया, then definitely there is going to be a problem in while solving the numerical problems. So Varignon theorem is all clear that moment of forces about any point is equal to the sum of the moment of its component forces about the same point, about that particular same point. Okay, clear. Now let's move on next with next slide. That is principle of moment. Here you can see. So principle of moment is nothing. It is the algebraic sum of moment in equilibrium is zero. Okay? क्या कह रहा है algebraic sum of moment? Algebraic sum means जितना भी हमारे movements का whether it is positive, clockwise or anti-clockwise, when we add all those forces, then we can have a algebraic sum. Okay? Then इसको हम और किस तरीके से समझ सकते हैं? It can be said that when the body is in equilibrium, when any body is in equilibrium, the sum of the clockwise movement and anti-clockwise movement about the same point is zero. Here you can see one example here. One, it is clearly mentioned here. You can see, let the body be subjected to force P, Q, R, S, all coplanar as shown in figure. Here you can see. Well, here is a body which is acting with a force P, Q, R, and S. Here is the direction for P, Q, and this is R, and this is S. Let it be required to find movement about any point O. Now we are calculating the clockwise movement. So clockwise movement I'm taking here as a negative. So negative P into this distance, the horizontal distance, we have plus Q into D3. D3 is this distance, and now anti-clockwise movement is positive R into D1. This R into D1 plus this S into D4. S into D4. Here we here यहाँ पे S आएगा हमारा, यहाँ पे इन्होंने बाय मिस्टेक यहाँ पे 5 लिख दिया है, यहाँ पे S आएगा. So जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो algebraic sum of movement should be equal to zero. If यहाँ पे equal to algebraic sum of movement in equilibrium is zero, then now we just have to just equalize these equations by SD for this, and plus RD1 minus of this, and when we calculate this, so we can have this equation. The sum of anti-clockwise moment is equal to sum of clockwise moment. So in next slide, I have a beautiful example for you about the principle of moment. Here you can see. So if the anti-clockwise moment and clockwise moments are equal, when anti-clockwise moment and clockwise moment are equal, then the seesaw is balanced. आप लोगों ने सबने शीशा देखा हुआ है. अगर क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है हमारा सेम रहेगा, ठीक है, इसका जो मूवमेंट है हमारा इस तरह से है, इसका जो मूवमेंट है हमारा इस तरह से है, ठीक है, ओके, इसके लिए इस तरह से हो रहा है, इसका मूवमेंट जो है हमारा इधर से आ रहा है, ठीक है. जब ये दोनों क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, देन हमारा शीशा बैलेंस रह जाएगा. सो दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट. सो व्हेन समथिंग इज बैलेंस अबाउट ए पिवट,
टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, हम इसको इस तरह से भी यहाँ पे समझा सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल फोर्सेस की। अब पैरेलल फोर्सेस क्या होता है? अब पैरेलल फोर्सेस को अब देखिए आगे मैंने इसमें डिस्कस किया है लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक एंड ऑल दीज। सो इन सब को डिस्कस करने से पहले हम पैरेलल फोर्सेस के बारे में समझ लेते हैं कि पैरेलल फोर्सेस है क्या। ये देखिए, ये फोर्स लग रही है, ये कोई फोर्सेस लग रही है मेरी। सो इनको मैं क्या कहूँगा? पैरेलल फोर्स कहूँगा। ये फोर्स एक दूसरे के पैरेलल लग रही हैं, ठीक है। तो दीज आर अवर पैरेलल फोर्सेस इन जनरल, इन बेसिक में अगर आपका देखूं। अब लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या है? कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस व्हेन एक्ट इन सेम डायरेक्शन, दीज आर नोन एज लाइक पैरेलल फोर्सेस। एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होगी? कोप्लानर पैरेलल फोर्सेस व्हेन एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, लाइक होंगी तो वो पैरेलल ही एक दूसरे के, लेकिन कुछ इस तरह से, लाइक इस तरह से कोई फोर्स है। जैसे मान लिया एक इस डायरेक्शन में है, दूसरा कोई इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह की फोर्सेस हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नाउ इफ वी हैव टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ लाइक पैरेलल फोर्सेस, देन हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट? Like P and Q are two like forces, parallel forces acting at a point A and B. Then what will the resultant is? P plus Q. Absolutely. ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें, ये कह रहा है let P and Q are two like parallel forces acting at a point A and B. ये कोई लाइन है, this is our A, this is A, okay, and this is B. यहाँ पे कोई दो फोर्सेस लग रही हैं हमारी, ठीक है, दिस एंड दिस फोर्स एट ए एंड बी, ओके। ये फोर्स को मैं थोड़ा इसको मैं दोबारा बना देता हूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे। सो द रिजल्टेंट विल बी आर इज इक्वल टू दिस पी प्लस क्यू। अगर मैंने नाम दिए हैं, अगर मान लो ये क्यू फोर्स है मेरा, ये वाला, and if this is our P force, then what would be the resultant? R is equal to P plus Q. Here it is for like parallel forces, and for unlike parallel forces, R is equal to P minus Q. Now this is upward direction, that is why I'm considering it as, for the sign convention for this upward forces is positive, and when some force is in negative direction, mean in downward direction, that will be considered as negative here. So if I take the example here again, just making some changes in this, let's take it as we have a force in this direction like this. Here we have a force like here, okay. Now for this it is P minus Q, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा यहाँ पे, that's it. Okay, I hope यहाँ से क्लियर हो गया होगा आपको ये चीज़ भी। Okay, good. Next we have torque moment of forces. So torque or moment of force refer to the turning effect of the force upon a body about a point. About a point means any fulcrum. Fulcrum is basically a fixed point. Fulcrum क्या होता है? हमारा एक fixed point होता है, ठीक है। अगर मैं इसका आपको फर्दर अगर आगे मैं डिस्कस करूँ, देखिए यहाँ पे इसने लिखा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म और लीवर आर्म। लाइक यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट है, ये एक लाइन है मेरा, एंड if this is our fixed point, so this will be known as fulcrum, and this is our arm, okay. This will be our moment arm or lever arm, and this can be your effort arm. यहाँ पे मान लिया कोई लोड लगा हुआ है, if there is any load, loaded है ये वाला portion, this is loaded arm, and this अगर यहाँ पे कुछ effort कर रहा है, then this will be our effort arm, okay. Good. Now what is the condition for a body to be in equilibrium under the action of or under the influence of forces? अब अगर मैं क्या कंडीशन रहेगी कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, कब कि जब कोई फोर्स का इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या रहता है? द सम ऑफ फोर्सेस
pulling the body in one direction must be equal to the sum of the forces pulling the body in opposite direction. If x force इस डायरेक्शन से लग रही है तो और y फोर्स इस डायरेक्शन से लग रही है, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी तभी किसी बॉडी को हमारे को इक्विलिब्रियम में रख सकेंगी. ओके, वही चीज अगर मैं बात करता हूँ द सम ऑफ द मोमेंट टेंडिंग टू रोटेट द बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर मोमेंट की अगर मैं बात करूँ उस फोर्स की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करता हूँ, अगर ए में जो मोमेंट है, जैसे कि मैंने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की बात की, if the moment over there in a direction in clockwise direction is equal to the movement in anti-clockwise direction, तभी हमारा बॉडी भी इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो वहीं भी हमारा वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो है वो जनरेट होगा. वही यहाँ पे लिखा हुआ है algebraic sum of moment is equal to 0, यहाँ पे algebraic sum of force is equal to 0. Okay, so guys, in this particular lecture we are going to just complete this complete with these slides. We are going to cover the next topic in our coming videos. So इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे. जैसे जैसे हम लोग चीज़ों को समझते जाएंगे हम और फर्दर आगे स्टडी करते जाएंगे. ठीक है, इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग, इफ़ ये आपको कोई इस तरह से क्वेश्चन है आपको इससे related, so you can mail me on my mail id which is pankajud@gmail.com. ओके, अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है सो आप मुझे मेल कीजिए. आई विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक ऑन दैट मेल. ओके, सो विद दिस प्लीज स्टे सेफ. थैंक यू सो मच.